children. How are you all? I hope you all are fine. Today, as I had got lot of requests for discussing the sample paper of class 10th, so I'm having this book of MCQ for term 1. Let us explore what the questions and how which type of questions are being asked in your examinations. So I'm going to open this one. First of all, I'll go through reason and assertion type questions, because direct MCQ you are able to solve by if you are having a good knowledge of the theory, right? So I'm taking first reason and assertion type question. So in these type of questions, the directions is given, right? So in each of the following questions, as a statement of assertion A is given, and for reason R is given, so first option will be if both R and A are true and R is the correct explanation of A. If both A and R but R is not the correct explanation of A. If A is true or R is false, third option. Or fourth hoga A is false but R is true. So you have to find, you have to tick mark whatever the suitable answer will be. So I'm going to here read out this question. Rusting of iron is an example of a chemical change. This is assertion, right? Rusting of iron is a chemical change. This is assertion. So reason is given. In a chemical change, the properties of substances before and after the change are entirely different. So this is our reason. Reason is given that in a chemical change, the properties of the substances before and after the change are entirely different. So my dear, what will be the answer of this question? So the answer of this question will be A. Both reason and assertion is true, and reason is the correct explanation for the assertion, right? Next question is 2C2H2 plus 5O2 gives 4CO2 plus 2H2O. This is the equation. Is not a balanced chemical equation of the reaction. ओके ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है. सो रीजन दिया हुआ है ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो इट इज आल्सो करेक्ट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर आप फॉलो करेगा तो रिएक्शन ऑटोमेटिक बैलेंस होगी. सो बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, right? So first option will be correct here also. And the next assertion I'm going to read is reaction of zinc granules with dilute hydrochloric acid. Reaction of zinc with dilute hydrochloric acid is an exothermic reaction. क्या ये exothermic reaction है? तो reason दिया हुआ है zinc being more reactive than hydrogen displaces it and form zinc chloride. So you can see the reaction here. Zn plus HCl dilute है. It gives ZnCl2 plus H2, right? So reaction is not balanced, तो through HCl लगा देंगे, reaction balance हो जाएगी. So this is the balanced reaction. 2Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2. It is an exothermic reaction or not? So here reason is true. Reason is true and assertion is true, but reason is not true, right? So this will be the answer. Okay, so these type of questions will be asked like I'm reading next one. Assertion: food containing fat and oil are flushed with nitrogen gas, and the options, the reason are nitrogen gas act as an antioxidant. So here also both A and R is true, and reason is the correct explanation of the assertion. I hope it is clear. Okay. Next is I'm going to tell you about case study type of questions. So here, as in English, you are going to solve a lot of questions like unseen passages. So in the same way, you are being provided with the one paragraph related to your concepts, and then 4 or 5 questions will be asked from this, right? So I am reading out one case study based question. Just focus it carefully and listen. The gradual eating up of metal and their conversion into their chemical
into their chemically more stable forms such as oxides, carbonates, hydroxides, sulfides, etc. is called corrosion. So the corrosion of iron metal is known as rusting, and the presence of air and moisture are the necessary conditions for the corrosion to take place, right? Rusting of iron is also an example of a redox reaction. Iron present in a substance is first oxidized to iron hydroxide. Here iron is present in its Fe2 plus state, and then to iron oxide, which is Fe3 plus state. So the oxygen and water present in the air substances getting reduced. Now, on the basis of the above case study and the related concepts, answer the following questions. First question is, identify the element in which corrosion is advantageous. इनमें से कौन से मेटल में, कौन से गिवन ऑप्शन में कोरोजन एडवांटेजियस है, मींस फायदेमंद है? तो ऑप्शन है आपका कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर. सो द आंसर विल बी, यू ऑल नो, एल्यूमिनियम, बिकॉज you already have studied that question, why aluminium metal is used for the making of utensils for cooking, because once the layer of oxide takes place in that utensils, further oxidation will stop, right? So this is the correct option. So aluminium will be correct option. In next question, in which of the following element corrosion does not takes place? किसमें, इनमें से किसमें corrosion नहीं होगा? ऑप्शन है आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड. आपको पता है आंसर, द आंसर विल बी गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज अ नोबल मेटल. एम आई मेकिंग सेंस? ओके, सो व्हेन सिल्वर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग. उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है. वो ब्लैक कोटिंग किस चीज की है, राइट? द फॉर्मूलाज आर, फर्स्ट ऑप्शन Ag2O, second option Ag2S, next is AgNO3, and last is Ag2CO3. So what will be your answer? You all know the answer is Ag2S, right? Because silver sulfide का formation हो जाता है, जिस कारण it becomes tarnished or blackish in color. Next question is, an element X on exposure to air develops a green coating. एक कोई एलिमेंट है X जो एक्सपोजर, ऑक्सीजन के एक्सपोजर से ग्रीन कोटिंग डेवलप कर लेता है, एंड अ न्यू कंपाउंड Y इज फॉर्म्ड. सो द सब्सटेंसेस X एंड Y आर, X और Y क्या है? X यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, और Y जो होगा आपका CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस हो जाएगा. और चार ऑप्शंस आपके दिए हैं, आसानी से आप चूज कर पाएंगे, राइट? क्योंकि ग्रीन कोटिंग कॉपर पे ही होती है. कॉपर के बर्तन आपके घरों में होंगे, और पुराने बर्तनों को आप नोटिस कीजिएगा, देखिएगा, यू विल गेट द आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट इज. रस्ट का करेक्ट केमिकल फार्मूला क्या होगा? सो द ऑप्शंस आर Fe2O3.XS2O, FeO.XS2O, थर्ड ऑप्शन इज Fe3O4.XS2O, and fourth option is Fe.10H2O. So the answer will be Fe2O3.XS2O, because the number of water molecule is not certain. Fe2O3.XS2O, it actually depends upon the containing capacity of water. कितना water contain कर रहा है, इसके ऊपर depend करता है चीजें. So you all can understand this. So this was the first case study question. Now I'm going to read the second case study. Listen carefully. Anthony Lavoisier gave the law of conservation of mass, which states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. So for a chemical reaction taking place, the total mass of reactant and product will be same at any point in time in a closed system. Closed system means system में, closed system का मतलब होता है reaction is going on and no external output is there or input is there, right? This further concludes that the number of atoms of each element remains the same, right? So before and after a chemical reaction, that is a chemical equation is to be balanced. So a balanced chemical equation not only provides information about the names and symbols of the elements and compounds, but also the ratio and masses of the reactants and products. Okay, so this is the excerpt. From this, the questions are framed. So I am reading out the first question. Read the following. A skeletal equation does not convey. Skeletal equation आप सभी को मैंने बताया था
कि व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन, द अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है बेटा, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, रफ है एकदम, उसको आप कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन। तो स्केलेटल इक्वेशन क्या कन्वे नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन है द सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो आई थिंक दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, बिकॉज ये तो कन्वे करता ही है कि क्या एलिमेंट है क्या नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। यस, दिस इज ट्रू, ये सही है। एंड द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट फॉर्म, ये तो गलत है। द बैलेंस फॉर्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ओके। तो मुझे लगता है सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आप इसमें देखिए, पहला ऑप्शन दिया है फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरा दिया है सेकंड एंड फोर्थ, और थर्ड दिया है सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ दिया है सेकंड ओनली। सो द आंसर विल बी सेकंड एंड फोर्थ, राइट। सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट आप ध्यान से फिर से सुन लीजिए। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, राइट। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स मीन्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, सुनिएगा ध्यान से, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। क्या पता चलता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स? नहीं पता चल सकता यार, पहले हम बैलेंस करेंगे तब ना पता चलेगा। तो फोर्थ ओनली द बैलेंस फॉर्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो आपका ये सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे रिएक्शन दी हुई है, उसमें एक्स और वाई आपको पता करना है। N2 plus XH2 gives YNH3. It means that what you have to do, N2 plus XH2 arrow YNH3, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये दिया हुआ है, इसमें हमें पहचानना है कि X और Y क्या है। तो बेटा बैलेंस केमिकल रिएक्शन आप जब करोगे तो ये हो जाएगा N2 plus 3H2 gives 2NH3। तो आंसर आपका क्या हो गया? X3 होगा, Y2 होगा। सो देख लेते हैं, X3 Y2, X1 Y2, X2 Y3। तो आपका आंसर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, X3 है और Y2 है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी का तीसरा क्वेश्चन है, वेरियस सिंबल्स आर यूज्ड टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। What does the symbol downward arrow indicates? इस तरीके से अगर नीचे की ओर एरो बना हुआ है तो ये क्या इंडिकेट करता है बेटा? ये इंडिकेट करता है कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसमें, राइट। देखो, अगर एरो ऊपर की ओर है इट मींस रिलीजिंग ऑफ गैस रिलीज हो रही है, और अगर नीचे की ओर एरो है तो पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑप्शन सुन लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ गैस, formation of precipitate, evolution of heat, absorption of heat. So it is very clear when the arrow is downwards, it means that it is creating precipitate, right? Next question, the symbol AQ, aqueous, represents the substance is. अब AQ अगर दिया है तो उसका मतलब क्या हुआ कि सब्सटेंस मॉल्टेन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, वोलेटाइल स्टेट में है, या डिसॉल्व इन वाटर है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डिसॉल्व इन वाटर, because aqueous word is taken out from the water. Aqueous is a Greek word, right? So these two study based questions I had discussed, and reason assertion type questions I had discussed. This was the most necessary part which I have to tell you all. Let us take up one more case study question, then we end this session. So in a conical flask, sodium sulfate solution is taken and a test tube filled with calcium chloride is kept inside it. मीन्स एक कोनिकल फ्लास्क में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें टेस्ट ट्यूब कैल्शियम क्लोराइड को टेस्ट ट्यूब में भर के रख दिया गया है। द फ्लास्क इज फिटेड विद द कॉर्क, और कॉर्क को फ्लास्क मतलब कॉर्क से फ्लास्क को ढक दिया गया है, एंड देन वेड ऑन ए बैलेंस एज शोन बिलो, और उसको फिर वे किया गया, मीन्स उसको वजन किया गया। द फ्लास्क इज देन इन्वर्टेड, उसके बाद फ्लास्क को इन्वर्ट कर दिया, मतलब कि पूरा वो सब मिल गया, उसमें से सोडियम सल्फेट के साथ में आपका कैल्शियम क्लोराइड मिक्सअप हो गया, एंड देन इज एडेड टू सोडियम सल्फेट। द फ्लास्क वाज वेड अगेन एंड शोन इन फिगर 0.3, दैट मींस फिगर बनाया हुआ है इसमें। मतलब क्या हुआ कि एक फ्लास्क है, इन दैट फ्लास्क सोडियम सल्फेट इज देयर, एंड देन वन टेस्ट ट्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड दैट फ्लास्क, एंड दैट इज that contains CaCl2, and it is covered with the cork, and that then it is inverted. When it is inverted, all the calcium chloride is mixed up with the sodium
sulfate solution. So what will be the reading on the balance shown in figure 3? इसमें रीडिंग क्या होगी? तो इसमें दिया हुआ है 184.34 ग्राम एग्जैक्ट, मोर देन 184.3 ग्राम एज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, लेस देन 184.3 ग्राम एज गैसेस आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन सो कैन नॉट से। तो पहली चीज बेटा इसमें देखिए कि आपको कहीं भी मास दिया हुआ है क्या? कोई मास दिया है इसमें कि कितना ग्राम है? आपके हिसाब से लग रहा है कि आपको पहला ऑप्शन करेक्ट है, 184.3 ग्राम एग्जैक्ट। लेकिन माय डियर, इसमें कहीं भी कोई ऐसा कोई चीज नहीं दिया हुआ है जिससे ये पता चल रहा हो कि इसमें कुछ मास दिया हुआ है। तो आंसर आपका हो जाएगा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, सो कैन नॉट से, वी कैन नॉट से, राइट? ओके, next is next I am reading down the what case study again. Decomposition is a type of reaction in which a single compound splits into two or more simpler compounds. It can be classified into three types depending upon the type of energy they require to carry out the reaction. These are thermal decomposition, electrolytical decomposition, and photolytic decomposition requiring heat, right? So hydrolysis is the electrolytic decomposition of water. In this reaction, water is converted into hydrogen and oxygen gases on heating, passing electricity. You all know that when heat is involved, that is thermal decomposition. When light is involved, photochemical decomposition हो जाएगा, और electricity है तो electrolytical decomposition reaction हो जाएगा. So the adjoining diagram is electrolysis of water. यहाँ पे एक diagram दिया हुआ है. You can see this diagram. This diagram, this one diagram is showing the electrolysis of water, right? So on the basis of the above case study, answer the following questions. The first question is, which of the following statement is correct or incorrect? ठीक है, which of the following statement is correct? First is, negatively charged electrode is cathode in electrolysis, positively charged electrode is cathode in electrolysis, hydrogen gas is formed at negatively charged electrode, oxygen gas formed at positively charged electrode. ठीक है, तो इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोड कहां पे है, उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा आपका इसमें दिया हुआ है ना, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड एज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। एक तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि वो हाइड्रोजन जो है आपका नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा, ठीक है ना, और कैथोड पे आपका पॉजिटिव आना जाएगा, ठीक है ना? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए क्या ऑप्शन होगा? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड सेकेंड ऑप्शन है क्या? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, सेकेंड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 2:, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही है, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे जब लिबरेशन होगा तो उसका रेशियो क्या होगा आपको मालूम है? एटॉमिक रेशियो पूछ रहा है, तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो रेशियो विल बी 2:1, राइट? आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच अंडरगोज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें से कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करेंगे? पहला ऑप्शन है H2A2, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, FeSO4 आयरन सल्फेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, दिस इज लेड नाइट्रेट, एंड NaCl। तो आंसर विल बी NaCl बिकॉज लेड नाइट्रेट आपने लैब में किया हुआ है, मैंने खुद कराया है आपको लैब में। तो लैब में आपने देखा होगा कि लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो क्रैकिंग साउंड और ब्राउन गैस प्रोड्यूस होती है। FeSO4 को भी हीट किया जाता है एंड H2O2 का भी प्रोसेस अलग होता है। तो NaCl को हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, राइट? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन is also an exothermic reaction, endothermic reaction, precipitation reaction, neutralization reaction. What will you say? So a decomposition reaction, अब इसमें जो है डेटा आप देखिए, इन्होंने क्या किया है, एक्सोथर्मिक भी लिखा है, एंडोथर्मिक भी लिखा है, प्रेसिपिटेशन भी लिखा है, ठीक है? तो प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है भाई, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी होता है, 2-3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आखिरी ऑप्शन इनका जो है वो क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये इनकरेक्ट है, बाकी तीनों करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट X अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑन हीटिंग। अरे यार, मैंने ब्राउन फ्यूम की बात कर दी तो तुरंत अंदाजा लगा लो लेड नाइट्रेट की बात हो रही है। ऑप्शन में देख लो, दिया हुआ है सेकेंड ऑप्शन PbNO3 का होल ट्वाइस, दैट विल बी योर आंसर। सो माय डियर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो बेहतरीन मेहनत करिए, अच्छे से
मेहनत करेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप एमसीक्यू में गोले भरिएगा तो गोला भरने का सही तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। इस तरीके से ही आप गोले को कलर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये गोला है और इस गोले में मान लो आपका जो भी आप ऑप्शन कर रहे हैं, डी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन को कुछ इस प्रकार से पहले आउटर लाइन इसकी जो है इस तरीके से बना लीजिए। आउटर लाइन बनाने के बाद फिर अंदर आप गोला कहिए और गोला ऐसा बनाइए कि मतलब काला इस तरीके से ब्लैक करना है आपको कि कहीं पे भी कुछ सफेद सा नजर ना आए। मतलब इट शुड बी एंटायरली covered with your black ink or blue ink, whatever the pen you are using. Then only it will be read by the computer. So in this way you have to color the balls. Okay, so Tidal, thank you so much for watching it, and if you like the video, share it, comment, and please subscribe if you haven't subscribed yet. Thank you and have a good night. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.